Hello dear students, welcome you all. So, in molecular basis of inheritance, today we have to study a new topic, that is DNA packaging. तो आइए देखते हैं DNA packaging के बारे में. Dear students, we know DNA is present inside the nucleus of the cell, associated with chromosome. So DNA in the form of chromosome, it is present inside the nucleus of the cell, like that. Suppose it is a mammalian cell, typical mammalian cell. Here it is the nucleus of that cell, and inside nucleus DNA is present in the form of chromosome inside this nucleus. So there is DNA. अब न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, इट इज अबाउट 10⁻⁻⁶ मीटर. अगर हम साइज देखते हैं न्यूक्लियस का तो ये होता है लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है दैट इज नाउ मेजर्ड. उसको अगर स्प्रेड करके काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो इट इज अबाउट 2.2 मीटर. डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर, लेकिन जिसके अंदर वो कंटेंट है न्यूक्लियस में, उसकी लेंथ है ओनली 10⁻⁻⁶ मीटर. वेरी मच स्मॉल. सो वी कैन से दैट इवन वी कैन नॉट ऑब्जर्व द सेल बाय द नेकेड आई. तो डीएनए तो उसके न्यूक्लियस में है एंड इट इज वेरी मच लॉन्गर एज कंपेयर टू दैट लेंथ ऑफ दिस न्यूक्लियस. इसका मतलब इतना जो लॉन्ग डीएनए है वो छोटे से न्यूक्लियस के स्पेस में अपने आप को अकोमोडेट कर रहा है. अब वो अपने आप को इतने छोटे से स्पेस में कैसे अकोमोडेट करेगा, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर उसको पैकेजिंग करना होगा, प्रॉपर फोल्डिंग, सुपर फोल्डिंग करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं. जैसे अपने को कोई ईयरफोन छोटे से बैग में रखना है तो हम उसको प्रॉपर फोल्ड करके रखेंगे तो वह अकोमोडेट होगा. तो वैसे ही much more lengthier DNA, it is accommodated in a very small space of nucleus, and for that purpose it have to be systematically packaged, systematically folded, so that it should be accommodated in the small space of that nucleus. That is simply known as the packaging, that is the DNA packaging. दोनों प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए के पैकेजिंग के बारे में देखते हैं. स्टार्ट विथ पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल की पैकेजिंग के बारे में देखते हैं पहले. तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग वी कैन से. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो प्रोकैरियोटिक सेल, that is we can also say bacterial cell, that is simple type, primitive type. We know cell wall is there, membrane is there, nucleus of this prokaryotic cell, it is primitive type, it is not well developed, we know. So there will be no nuclear membrane, nucleolus, genetic material directly present in the cytoplasm. So in this way, here DNA, it is directly present here inside cytoplasm, as there is no definite nucleus. So in this manner we can also say it is nucleated. So in this manner DNA is present there. If we observe that DNA which is present, the length of DNA, it is about 1100 micron, and the cell in which the DNA it is contained, it is about 2 to 3 micron. DNA की लेंथ है 1100 माइक्रोन, और जिस सेल में वो कंटेन है, अकोमोडेट है, उसकी लेंथ है ओनली 2 to 3 माइक्रोन. तो डीएनए इट इज मच मोर लेंथियर देन द डायमेंशन ऑफ द सेल और दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द सेल. सो टू अकोमोडेट इन द स्मॉल स्पेस, हाउ इट विल बी पैकेज्ड, दैट वी हैव टू नाउ नो, वी हैव टू स्टडी. डीएनए which is present in prokaryotic or bacterial cell, which is double stranded
and it is now present in the form of this circular ring structure. So DNA, it is present in this circular ring structure, which is now uncoiled initially. So only naked DNA is there. So prokaryotic DNA, it is now also known as naked DNA, because prokaryotic DNA, it is not associated with histone protein. Some other non-histone protein, they are associated with that, but not histone protein. So only DNA, naked DNA is there, and it is present in the form of circular ring structure, double stranded. Now during cell division, that DNA, to accommodate in small space, it will form such type of loops or domains. So in this way, certain loops or domains they will produce from that double stranded DNA. कम स्पेस में अपने आप को accommodate, अपना साइज छोटा करने के लिए अब वो उसमें loops प्रोड्यूस करेगा. So about 40 to 50 loops or domains, that loops or domains they will produce from that. The loops or domains, they will be connected by these RNA connectors. So there is RNA connector in between loops which will connect that particular domains. So in this way, the particular size of that particular DNA, it will be now reduced from 350 micron to the 30 micron, and such type of the structure, it is now folded coiled structure. Okay, student, fully relaxed circular DNA molecule, it will be undergo coiling or folding. Means what? It will be form the loops or domains. About 40 to 50 loops or domains they are formed, and therefore the size or the length, it will be reduced up to 350 to only 30 micron now. ठीक है. अब आगे की स्टेज में और अपने साइज को कम करने के लिए, again that loops which is present here, they will be undergo again coiling. So already it is coiled or folded structure. Now again in these loops there will be coiling, means coiling in coiling, or we can say folding in folding. And in this way, such type of super coiled structure or super folded structure we can observe here. And due to that, again there will be a reduction in size of that particular DNA. So that it will be reduced up to 2 micron due to this super coiling. Coiling in coiling, coiling in again loops, and therefore that is the super coiled folded structure. That super coiled folded structure, again it is connected by RNA connector. Again here there is the presence of non-histone proteins are there. So there will be positively charged histone-like protein. There is no histone protein in prokaryote. There is the presence of histone-like DNA binding protein. So once again, in prokaryotes there is no histone protein. There is the presence of positively charged histone-like DNA binding protein which is associated with that particular DNA. Because they are positively charged histone-like protein, and we know DNA is negatively charged, and therefore negatively charged DNA, it is wrapped around that positively charged histone-like DNA binding protein. Okay. Again, two important enzymes, they are related with this binding of that non-histone protein with that DNA और non-histone protein के बीच में जो binding है, attachment है, उसको पक्का करने के लिए और दो एंजाइम्स की जरूरत होगी. वन इज DNA gyrase. So important name, DNA gyrase enzyme, and second enzyme, students, that is DNA topoisomerase 1. DNA gyrase and DNA topoisomerase 1. So in this way, DNA to confine in this small space, DNA अपने आप को छोटे से सेल में अकोमोडेट करने के लिए अपने आप को फोल्डिंग करेगा, डोमेन्स बनाएगा, लूप्स बनाएगा, एंड साइज रिड्यूस अप टू 30 माइक्रोन फ्रॉम 350 माइक्रोन, एंड देन coiling in coiling or super coiling we can say, it will be occurs and the size it will be reduced up to 2 micron, and therefore it can be accommodated in this very small space of the cell. So in this way, students,
the DNA molecule in prokaryotes, it will be packaged in the form of coiled and supercoiled structure, and the factor which will be helpful for this coiling, that is the positively charged histone like DNA binding protein, enzyme DNA gyrase and DNA topoisomerase. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे पढ़ते हैं यूकैरियोट डीएनए पैकेज। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। नाउ वी नो eukaryotic cell, it is well developed, having a well developed nucleus, nucleolus. Now the DNA which is present in eukaryotic cell, it is present in the form of chromatin network, जो आगे चल के नेक्स्ट स्टेज में मेटाफेज में पर्टिकुलरली जो क्रोमोसोम है, इनिशियली इन इंटरफेज इट विल बी अपीयर्स एज chromatin network. That chromatin network, or we can say chromosome, in eukaryotes it is now made up of two parts. दो पार्ट से ये क्रोमैटिन नेटवर्क बना है। एक होता है डीएनए एंड इट इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। इसके पहले बच्चों हमने देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, देयर इज ओनली डीएनए, एंड देयरफॉर प्रोकैरियोटिक in prokaryotes we cannot say there is chromosome, there is only naked DNA. But in eukaryotes DNA is present associated with histone protein, and that is in the form of chromatin network structure or chromatin reticulum structure during interphase. अब that histone protein which is present in DNA, that histone protein which is associated with DNA, it is of 5 different types. Histone protein, it is the basic protein, it is made up of lysine and arginine, and that histone protein, it is now made up of 5 types. So 5 types are H1 histone protein, H2A, H2B, H3 and H4. So in this way these are the 5 type of what? Histone protein which is associated with DNA. DNA and histone protein, they form the chromatin network during the interphase, जो आगे नेक्स्ट स्टेज में जाके मेटाफेज आते आते जो कॉइल और कंडेंस होने के बाद जो क्रोमोसोम का रूप ले लेता है या क्रोमोसोम बन जाता है, दैट इज द क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इफ वी ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन under low power of microscope, so in microscope we will appear that beaded structure like that. In low power of microscope we cannot magnify, and such type of the structure it will be appear in chromatin. Chromatin का थोड़ा सा पार्ट हम मैग्नीफाई करते हैं लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में, so it will be appear just like the string of बीड लाइक स्ट्रक्चर, मनी की माला, मोती की माला, ऐसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी अगर हम छोटा सा पार्ट को माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करते हैं। इन दिस स्ट्रिंग ऑफ बीड स्ट्रक्चर, माला में 2 पार्ट्स होते हैं हमको पता है, देयर इज द बीड एंड देयर इज स्ट्रिंग। ओके, दैट बीड पार्ट इन दिस chromatin, it is now known as nucleosome. So that is nucleosome, and second string part it is now known as linker DNA. इसको कहेंगे linker DNA. ठीक है बच्चों, यहां तक हमने देखे यूकैरियोट्स की पैकेजिंग। यूकैरियोट्स में जो डीएनए रहेगा इट इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। इंटरफेज में इट विल बी वेरी मच अनकॉइल्ड, लॉन्गर, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज क्रोमैटिन नेटवर्क। Chromatin or chromatin material under low power of microscope it will be appears like string of bead like structure, and that bead like structure it is known as nucleosome, and the string which will be connect 2 beads it is known as the linker DNA. Okay, आगे बढ़ते बच्चों। अब ये जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली बीड्स और स्ट्रिंग,
न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए ये कैसा है, बीड्स कैसे बने हैं और कैसी स्ट्रक्चर होती है डिटेल में, ये हम नेक्स्ट डायग्राम में यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ दिस न्यूक्लियोसोम मींस बीडेड पार्ट, बीडेड स्ट्रक्चर, इट इज नाउ मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। Bead like structure, that is the nucleosome, it is now made up of histone protein and it is made up of 8 molecules of histone protein, 2 molecules of each, 2 molecules of H2A, 2 molecules of H2B, 2 of H3 and 2 H4. So total 8 molecule, किसको छोड़ के, H1 को छोड़ के, तो 2 molecules of each of H2A, H2B, H3 and H4. So total 8 molecules, like that in this diagram we can observe 2 molecules, एक बॉल के समान स्ट्रक्चर है ये, और उसमें 8 molecules है हिस्टोन प्रोटीन्स के। कौन से 2 molecules of H2A, like that H2A, 2 molecules of H2B, that is the H2B, 2 molecules of H3, that is the H3, and 2 molecules of H4, that is H4. So in this way total 8 molecules of histone proteins. Histone protein, they are the basic protein, they are made up of amino acid like lysine and arginine. Now that nucleosome, that particular bead or nucleosome, it will be wrapped by DNA, thread like DNA. So suppose there is now 8 molecule or octamer of histone protein, we will say it will be wrapped or it will be covered by thread like DNA. Okay, so that thread like DNA, it will wrap one wrapping completely, एक बार वो उसको totally completely wrap करेगा, and second time it will be wrapped 75%, not completely. So that is the 3/4 out of 4 part, 3 part it will be covered by that wrapping. So suppose it is the first wrapping, it is complete, so first one wrapping, and second wrapping it is incomplete, it is 3/4, or we can say 1.75 ton, okay, or 1/3 wrapping of DNA, it will be wrapped to that histone protein. Okay, so in this way there will be histone protein and there will be the 1 3/4 wrapping of DNA. That 1 3/4 wrapping of DNA, it will be consist of about 146 base pairs. Okay, so 146 base pairs, they are present in that particular DNA which is wrapped around this octamer of histone protein. Okay, now at this point, अब ये हो गया न्यूक्लियोसोम बच्चों। न्यूक्लियोसोम इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, एक तो हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल ऑक्टेमर और सेकंड 1/3 wrapping ऑफ डीएनए। ओके, तो ये 2 पार्ट से न्यूक्लियोसोम बना हुआ। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट से डीएनए एंट्री करेगा और बाहर आएगा न्यूक्लियोसोम से, at this particular point there will be the presence of remaining protein, that is the histone protein। कौन सा बचा था? H1। so that is H1 protein, it will be plug that nucleosome or it will be particularly helpful to pack that particular nucleosome at this junction। ठीक है, तो जहां से डीएनए एंट्री कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन को रैप करने के लिए और जहां से फिर वो बाहर आ रहा है दूसरे एंड से, तो इस दोनों एंड पर उसको डीएनए को प्रॉपर मींस डीएनए को प्रॉपर पैकेजिंग देने के लिए हिस्टोन प्रोटीन के साथ देयर विल बी द अनदर रिमेनिंग हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट, दैट इज द H1 प्रोटीन। ओके, सो इन दिस वे देयर विल बी द H1 प्रोटीन। अब जैसे यहां पर ये स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हो गया, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 2 टाइप, 2 ईच ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। हियर इट इज द डीएनए, डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन को रैप किया, एक कंप्लीट टर्न हो गई, दूसरी कंप्लीट नहीं हो पाई, पहले से ही लीव हो गया, डीएनए बाहर आ गया, 3/4 रैपिंग। ठीक है, और ये दोनों के जंक्शन पर पांचवा H1 टाइप का प्रोटीन है जो और पैकिंग के लिए उसको मदद करेगा। हालांकि ये जो H1 टाइप का प्रोटीन है वो न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है। न्यूक्लियोसोम कैसे बना है? 8 टाइप ऑफ
हिस्टोन प्रोटीन मीन्स ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड 1 3/4 रैपिंग ऑफ डीएनए, इससे ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम बना हुआ है। और H1 प्रोटीन इट विल बी एडेड आउटसाइड। अब ये एक न्यूक्लियोसोम, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स है। ओके, सो वन न्यूक्लियोसोम इट विल बी नाउ कनेक्ट टू द अनदर न्यूक्लियोसोम बाय दिस पर्टिकुलर डीएनए, एंड दैट पर्टिकुलर डीएनए क्या कहेंगे उसको, दैट इज द लिंकर डीएनए। ओके, एंड दैट लिंकर डीएनए इट इज अबाउट 54 base pairs long. So 54 base pair long linker DNA, it will be connect, or it is the DNA which will connect what to nucleosome. Okay, another nucleosome, again the same structure, it is made up of the octamer of histone protein, 2 molecule of each, again DNA 1 3/4 wrapping of DNA, again at the junction जहां से DNA एंट्री कर रहा है और बाहर आ रहा है, there will be the presence of H1 protein. So ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स देयर विल बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ जब सेल डिवीजन होगा, ये सब स्ट्रक्चर हमको इंटरफेज में सेल के रेस्टिंग स्टेज में ऑब्जर्व करेंगे हम इसको, ठीक है। अब इंटरफेज में या जब सेल डिवीजन के समय में दैट न्यूक्लियोसोम, that particular structure it will be undergo coiling and condensation. हम सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमैटिन मटेरियल, chromatin, it will be undergo coiling and condensation. So suppose it will be undergo coiling and condensation, these are present in rows, and suppose it will be undergo coiling and condensation, क्या होगा, एक रस्सी लेते हैं और वहां पर जैसे गांठ है और दोनों साइड से उसको कॉइल करते हैं, तो नेचुरली जो बीड्स है उसके वो एक दूसरे के पास में आएंगे। तो इन द सेम वे इन अर्ली इंटरफेज वी कैन ऑब्जर्व मेनी न्यूक्लियो ड्यू टू कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, मेनी न्यूक्लियोसोम दे आर come closer to one another, they are now tightly arranged near to each other. Okay, again the structure it will be again same, no doubt they are made up of the octamer of the histone protein, it is having the 1 3/4 wrapping of the DNA, same structure. Okay, now एक डिफरेंस अपने को यहां दिखेगा कि that particular linker DNA it will not detectable, लिंकर डीएनए रहेगा है पर कॉइलिंग होने के वजह से और न्यूक्लियोसोम पास पास में आने की वजह से हमको क्या दिखाई नहीं देगा, लिंकर डीएनए दिखाई नहीं देगा, रहेगा पर दिखाई नहीं देगा। ओके, सो इन अर्ली इंटरफेज सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर वी कैन ऑब्जर्व इन द सेल। ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज होती जाएगी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो अर्ली इंटरफेज में हमको 100 एंगस्ट्रॉम इतने डायमीटर वाला ये एक फाइबर दिखाई देगा, इसको हम न्यूक्लियोसोम फाइबर कहेंगे, दैट इज नाउ द न्यूक्लियोसोम फाइबर। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेज में अगर लेट इंटरफेज में अगर हम जाते हैं तो लेट इंटरफेज में नाउ देयर विल बी फोल्डिंग, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑकर्स इन दैट न्यूक्लियोसोम फाइबर। जैसे मैंने कहा कि एक रस्सी है और हम उसकी फोल्ड कर देते हैं, पहली फोल्ड दूसरी फोल्ड ऐसे सपोज 6 फोल्ड कर देते हैं, सो दैट पर्टिकुलर, और फिर उसको कॉइलिंग और कंडेंसेशन करते हैं, एक रस्सी के 6 फोल्ड्स करते हैं और फिर उसको कॉइल करते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो वैसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी लेट इंटरफेज में। ओके, सो इन लेट इंटरफेज द सेम स्ट्रक्चर, सेम न्यूक्लियोसोम, सेम लिंकर डीएनए इट विल बी प्रेजेंट देयर। सिर्फ क्या हुआ कि मेनी न्यूक्लियोसोम फाइबर, अबाउट 6 न्यूक्लियोसोम फाइबर एक साथ उन्होंने कॉइलिंग और कंडेंसेशन किया, और जिसके कारण दे विल बी नाउ मोर थिकर अबाउट 300 एंगस्ट्रॉम। तो अर्ली इंटरफेज में ये दिखेगा हमको न्यूक्लियोसोम फाइबर। अगर हम लेट इंटरफेज में ऑब्जर्व करते हैं तो मेनी न्यूक्लियोसोम फाइबर दे विल बी कम अंडरगो कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर सोलेनॉइड फाइबर। इसको बोलेंगे बच्चों सोलेनॉइड फाइबर। सो इन दिस वे देयर विल बी सोलेनॉइड फाइबर विच विल बी हैविंग द डायमीटर अबाउट 300 एंगस्ट्रॉम। यहां तक ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज में अगर हम जाते हैं, इंटरफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, दैट इज नेचुरली प्रोफेज।
in prophase again the coiling and condensation it will be occurs. फिर से जो सोलेनॉइड फाइबर है, सोलेनॉइड फाइबर में फिर से कॉइलिंग आ गई, फिर से उसमें कॉइलिंग और कंडेंसेशन हो गया. तो सपोज इट इज वन सोलेनॉइड फाइबर, ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये एक सोलेनॉइड फाइबर, फिर सेकंड सोलेनॉइड फाइबर, थर्ड सोलेनॉइड फाइबर, मेनी सोलेनॉइड फाइबर, they will be undergo coiling and condensation which will form about 3000 angstrom structure. Okay, and that particular structure it is now known as chromatin. ये बन गया हमारा chromatin. Okay, तो chromatin यानी एक्चुअली क्या है, many solenoid fiber, they will be folds, they will be undergo coiling and condensation, and due to that there will be formation of that structure that is now known as chromatin, which can we observe in which phase, during the early prophase. ये हम देख रहे हैं अर्ली इंटरफेज, लेट इंटरफेज में. इंटरफेज के बाद में आ रहा है प्रोफेज. तो अर्ली प्रोफेज में मेनी सोलेनॉइड फाइबर दे फॉर्म दिस क्रोमैटिन. सुपर सोलेनॉइड फाइबर भी बोल सकते हैं और क्रोमैटिन. ओके, लेट प्रोफेज आते आते बच्चों मेनी क्रोमैटिन फाइबर, सपोज अब ये एक क्रोमैटिन फाइबर है. ओके, दैट वन क्रोमैटिन फाइबर. सो सच टाइप ऑफ दिस इज वन क्रोमैटिन फाइबर. ओके, सेकेंड क्रोमैटिन फाइबर, थर्ड क्रोमैटिन फाइबर, मेनी क्रोमैटिन फाइबर. दे विल बी अंडरगो नाउ कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन. ओके, एंड नाउ दे विल फॉर्म सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अब इसको हम बोल सकते हैं हाईली कॉइल और कंडेंसेशन हो गया करके, दैट इज नाउ द क्रोमोसोम. इट विल फॉर्म द chromosome or chromatid. Okay, so in this way there will be formation of chromatid. Chromatid क्या है, many chromatin fiber, they will be undergo coiling and condensation and it will form the chromatid. Okay, which is nothing but the chromosome. लेट प्रोफेज आते आते हमको क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाता है. ठीक है, और क्रोमोसोम इट इज अबाउट 7000 angstrom, that it is present in the form of chromatid 7000 angstrom. Okay, बच्चों आगे अगर बढ़ते हम, लेट प्रोफेज के बाद में कौन सा फेज आएगा, मेटाफेज. मेटाफेज में that chromosome it will now form the sister chromatids again. So that is one chromatid. Okay, second chromatid, one of 7000 angstrom, another also 7000 angstrom. Okay, so in this way there will be two chromatids. Okay, so we can say that they are the sister chromatids. That is chromatin, it is the chromatid. Here there are now 7000 angstrom or 7000 angstrom wale two sister chromatids are there, or chromosomes are there. Means there will be formation of thickest chromosome among the cell division, that is in metaphase. तो मेटाफेज में हम देख सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम को हमको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है तो कौन से स्टेज में हम ऑब्जर्व करते हैं, मेटाफेज में. व्हाई? बिकॉज क्रोमोसोम इट इज प्रेजेंट इन हाईली थिक एंड कंडेंस स्ट्रक्चर. ओके, तो दैट इज द क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स. ओके, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम मेड अप ऑफ मेनी फोल्डिंग ऑफ क्रोमैटिन इट इज made up of folding of many solenoid. Okay, and we know how the solenoid it is made up of. Okay, so in this way जो डीएनए है वो डीएनए इस तरीके से अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के आजू बाजू में क्वाइल कर रहा है. ठीक है, और इसीलिए इन स्मॉल स्पेस ऑफ दिस न्यूक्लियस इट कैन बी अकोमोडेट. ठीक है बच्चों, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है, ओके, दैट वाज स्टडीड. ये हर एक स्टेज के बारे में जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, दैट इज द कॉर्नबर्ग एंड थॉमस. तो इसको कॉर्नबर्ग एंड थॉमस मॉडल भी कहा जाता है. देखो अलग अलग नाम से हेडिंग दे सकते हैं हम इस टॉपिक की. पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन आल्सो वी कैन से न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल. And nucleosome solenoid model it is proposed by the scientists Kornberg and Thomas in the year 1974. Okay, ठीक है बच्चों, आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करो. ठीक है, और डिफिकल्टी सॉल्व करो.
ठीक है बच्चों, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।